The name of chapter is Ratio Analysis. In previous lecture, I explained what is the meaning of ratio. And in a simple language, ratio, it is a relationship between numerator and denominator. So you can easily understand the numerator and denominator. Suppose I say 2 by 3. So 2 is the numerator and 3 is the denominator. And ratio is helpful to each and every business. Each and every business for comparative decision. Means whenever company wants to realize the position whether our organization is in a position to earn the profit or not, or suppose how much profit earned by the business, or suppose company, etc., you can easily find out different types of ratios with the help of your income statement and balance sheet. And you all are known about the income statement, means your trading account, then your profit and loss account, and a statement, that is your balance sheet. Means from trading account you can find out the gross profit, from profit and loss account you can find out the net profit, and balance sheet you will get a true financial picture of our business. So if suppose I am interested to make comparison, for comparison we want homogeneous other business, then you can make a comparison. And suppose I want to make comparison of my business with my past tense, means I can easily understand in present tense my business is in a position, means in a growing position or not, and the financial structure of my business increases or not, my profit increases or not, I can easily understand with the help of trading account, profit and loss account and balance sheet. But what happened in suppose 2001, here is the gross profit through my trading account, that is suppose 1 lakh. ठीक है, gross profit. ठीक है, in 2002 the gross profit is suppose 1,20,000. ठीक है, then suppose increases. ठीक है, so what information I received, my gross profit of the business increased by 20,000, but it is what percentage, I will not get the information from my income statement or balance sheet. So you can easily find out the percentage of gross profit through your ratio analysis. Same thing I want to use for profit and loss account also. Suppose NP in 2001, that is suppose 50,000. ठीक है, and in 2010 that is 70,000. I understand the profit of my business increased by 20,000, but by what percentage I will not get information. So from trading account, profit and loss account and a balance sheet, you will get a position of our business. But for comparative study, there is a need to find out the percentage with the help of various ratios. So there is a need to understand how we can find out the ratios of our business with the help of different formulas. तो मैं अभी एक एक फॉर्मूला आपको बताऊंगा. The first is suppose formula, that is GP ratio. Gross profit ratio is equals to gross profit upon sales into 100. ठीक है,
So you can find out the profitability of your business with the help of gross profit ratio. ठीक है, you will get that gross profit from your trading account. ठीक है, you will get the sales from your trading account. So think about that, why I divided gross profit by sale, because I already before this I made an explanation meaning of ratio. Ratio means it is a relationship between numerator and denominator. Here gross profit depend upon sales, sale not depend upon gross profit. Gross profit depend upon sale, means the birth of GP depend upon sale. That's why I use this formula just like gross profit upon sale. ठीक है, and higher it is better. When you will get a higher, it is better if you made a comparison with your previous GP ratio. Suppose I say here in 2001 the gross profit ratio that is 30%. ठीक है, now means in 2005 or 2018 etc. the gross profit ratio it is 60%. So I can easily say when I compare the past tense with present tense, so I can easily say the profitability of a business increased by 30%. Means my business now in present tense in a good position. Then second is net profit ratio. Net profit ratio. So net profit upon sales. Net profit upon sale into 100. ठीक है, net profit you will get from the profit and loss account. ठीक है, and sale also. So you find out the net profit with the help of profit and loss account. ठीक है, means net profit you get, our business get that net profit by sale, not by other factor. So birth of net profit also depend upon sale. So net profit upon sale, suppose my profit, net profit is suppose 40% now. ठीक है, in previous year that profit is suppose 20%. So I can again say net profit increased by 20%. ठीक है, so higher the percentage of net profit it is better. ठीक है, means with the help of two ratios, means gross profit ratio and net profit ratio, we can find out the profitability of a business. कोई भी business का अपन profitability इससे find out कर सकते हैं. ठीक है ना, gross profit ratio GP upon sale, net profit ratio net profit upon sale. ठीक है, then think about that, can it be possible to means can you earn the profit, means gross profit or net profit without the expenses? So you will get answer, it is not possible. Means lot of expenses incurred in relation to business, but incurration of expenses depend upon the nature and size of that business. Means mostly means expenses incurred, means I want to divide all the expenses. ठीक है ना, just like office expense. ठीक है, office expense, financial expense, financial expense. ठीक है, and selling and distribution. Selling and distribution expense, selling and distribution expenses, mostly office expense incur, financial expense incur, and selling and distribution expense. But before this, expenses divided into two: direct, ठीक है, direct expense, ठीक है, then indirect expense. Indirect expense, both are important. Direct expense means those you can easily identified, means when you can easily identify, suppose this is my manufacturing unit, means company, raw material converted into finished goods.
How it is possible? So lot of expenses are labor, motive power, etc. So the means the existence of product depend upon raw material. So raw material, it is a direct expense, and whatever expense incurred to convert the raw material into finished goods, all are come under the expense, direct expense. But when I sum up all the expense, then I can say that is a direct cost. Okay, direct cost. And when I sum up the similar type of expenses, then I can use the indirect cost. After that, I bifurcated these indirect expenses on the basis of behavior: office expense, financial expense, and selling and distribution expenses. So you can find out the ratios of expenses. Expenses ratio, expenses ratio. ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो and expenses ratio. When I say expenses ratio, so I can easily find out office expense upon sales into 100. Then suppose financial expenses upon sales into 100. ठीक है, and selling and distribution expense upon sales multiplied by 100. ठीक है, you can easily find out the expense ratio, office expense upon sale, then financial expense upon sales, and the selling and distribution upon sales into 100. ठीक है ना, lower it is better. ठीक है, when I compare the expense ratio with past tense, suppose the such and type of expense ratio 10%, 5%, or suppose 20%, just like. But in present tense 8%, ठीक है, 2% and 15%. So I say the expense ratio it is better because I compare the present tense with the past tense. ठीक है, you can use these expenses for comparison, ठीक है, with another company also. But homogeneous product is very important, then you can make a comparison. आई बात समझे? ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने शब्द इस्तेमाल किया था ऑपरेटिंग रेशियो. ठीक है ना, ऑपरेटिंग रेशियो, यह एक बात ध्यान में रखना है, ऑपरेटिंग रेशियो. ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो मीन्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ठीक है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स multiplied by 100. देखो, before this I already explained the operating expenses. Operating expense, it is a bunch, it is a cluster of office expense, financial expense, and selling and distribution expenses. ठीक है ना, cost of goods sold means you can find out the cost of goods sold with the help of your trading account. ठीक है ना, cost of goods sold is equals to सेल्स माइनस, ये बात ध्यान में रखना है, सेल माइनस जीपी. आई बात समझे? सेल्स माइनस जीपी मीन्स यू विल गेट अ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अप प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल इनटू 100. ठीक है, मीन्स इन दिस ऑपरेटिंग द वर्ड इज आई यूज ऑपरेटिंग. ठीक है, इसका मतलब ऐसा हुआ कि जो बिजनेस का जो फंक्शन है वो ऑपरेट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए जो व्हाट एवर एक्सपेंसेस इनकर्ड, दैट ऑल द एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल, वेदर इट इज अ डायरेक्ट और
indirect. I already explained the cost or expenses, direct expense and indirect expenses, and it is a sum of operating expense means operating expense ratio. Operating expense ratio, operating ratio, ठीक है, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा. ऑपरेटिंग रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ये बात समझ आई, ठीक है. दूसरा एक महत्वपूर्ण ऐसा है, इफ सेल और जीपी इट इज नॉट गिवन इन एग्जाम्पल, so how you can find out the cost of goods sold? Means you can find out that cost of goods sold with the help of opening stock, ठीक है ना, purchases. जैसे देखिए ऑपरेटिंग ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, लेस क्लोजिंग स्टॉक, you will get a cost of goods sold. So you can find out this cost of goods sold, opening stock plus purchases means purchase of raw material, direct expenses means labor etc, less closing stock, then cost of goods sold. ठीक है. So whatever suppose the answer I get, again I want to use here because I say operating ratio and it is based on expenses, so lower it is better, जितना कम रहेगा उतना अच्छा. लेकिन ये प्रॉफिटेबिलिटी मतलब आपको डिटरमाइन करने के लिए यह जीपी रेशो और नेट प्रॉफिट रेशो कंपैरिजन में ज्यादा होना चाहिए, ठीक है. और जो भी इसके पहले मैंने एक्सपेंस रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो के बारे में बोला, वह जितना कम उतना अच्छा रहेगा, ठीक है. दूसरा ऐसा है, अभी है स्टॉक टर्नओवर रेशो. स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ठीक है. स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू cost of goods sold, cost of goods sold, ठीक है, cost of goods sold upon average stock, ठीक है ना. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक. अभी I already explained how you can find out the cost of goods sold, ठीक है. Now the average stock. Average stock means it is the average of opening stock and closing stock divided by 2, ठीक है ना. बहुत ही आसान है, very easy to find out. Opening stock plus closing stock, ठीक है, divided by 2, you will get a average stock, ठीक है. Whatever answer you will get, suppose 2, so you have to use 2 times. I was not in percentage, ठीक है. बिफोर जीपी रेशियो इन परसेंट, नेट प्रॉफिट रेशियो इन परसेंटेज, ऑपरेटिंग रेशियो इन परसेंटेज, एक्सपेंसेस रेशियो इन परसेंटेज, ठीक है. मतलब ऐसा हुआ कि ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए हैं रेशियोज, ठीक है, इससे आप प्रॉफिटेबिलिटी कंपेयर कर सकते हो. आप आपका पास्ट टेंस से भी कर सकते हो कंपैरिजन, और अदर कोई बिजनेस होगा मतलब जो जिसके लिए मैंने होमोजीनियस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, तो उसके लिए भी आप रेशियो एनालिसिस इस्तेमाल कर सकते हो. और दूसरी एक बात ऐसा है कि जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था, रेशियो जैसे अपने बॉडी में जो वेन होती है, इसका जितना इंपॉर्टेंस है उतना ही इंपॉर्टेंस मैं इसको दूंगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट रेशियो
it is not possible to take a decision. Means this chapter or ratio analysis is helpful for management accountant. So whatever company wants to take decision for future, so they can, means the management accountant can take a decision with the help of ratio whether our existing production process is in a position to take or not. So you will get an answer. Means we have to take the decision. I am not saying just like with the help of ratio analysis, the businessman taken a decision, shut down the activity. ऐसा मेरा कहना नहीं है. मतलब कैसा हुआ, जैसे एक्सपेंस रेशो कंपैरेटिवली अगर ज्यादा है, सो हाउ वी कैन रिड्यूस दैट. यह आंसर मिलेगा आपको सोचने के लिए, मजबूर कर देगा इस प्रश्न का उत्तर. अगर आपने फाइंड आउट ही नहीं किए एक्सपेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो आप निर्णय नहीं लेंगे. इसी वजह से रेशो का कंपैरिजन, रेशो के थ्रू कंपैरिजन करना यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अभी जैसे मैंने देखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 60% 40%, यहां कम बताया था, यहां पे बढ़ गया. इससे भी और मींस ईच एंड एवरी पर्सन वांट्स टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, दैट इज अ डिफरेंट मैटर. बट आई वांट टू से if suppose businessman or a company saved some expenses, can it be possible to minimize the cost of production by using your intellectual power? Then I say it is a good. फिर मैं बोलूंगा कि यह है वर्क. क्यों? कि जैसे प्राइस बढ़ाने से प्रॉफिट बढ़ाना ये कैसा है, रॉ डिसीजन टेकन बाय ऑल आर द बिजनेसमैन. ठीक है, देखो प्राइस बढ़ाने से प्रॉफिट बढ़ाना, इसको मैं रॉ डिसीजन बोलूंगा. ठीक है, लेकिन सपोज यू आर यूजिंग योर इंटेलेक्चुअल पावर एंड पास्ट एक्सपीरियंस एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन and you reduce it, you minimize, you save the expenses. I am not saying minimize, how you can save the expenses. That saving can be converted to increase the percentage of profits and to minimize the or decrease the percentage of expenses. आई बात समझे. इसी वजह से इसका इंपॉर्टेंस आपके ख्याल में आया होगा. और मैं बार बार, अभी 2 बार मैंने बताया और तीसरी बार और बोलूंगा कि देखिए प्राइस बढ़ाने के बाद प्रॉफिट बढ़ाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यू आर नॉट in a market only one. Lot of competitors are available. That's why I want to give lot of pressure to save the expenses. ठीक है, अब सेविंग में when if the businessman wants to save the expenses, so he can't bargaining with the quality. ये बात बहुत, इसी वजह से इसके लिए इंटेलेक्चुअल पावर चाहिए, क्योंकि कैसा है, क्वालिटी भी आपको वैसे ही रखना है और एक्सपेंस भी खुद के कम करना है. कम करना है यानी सेविंग करना है. मैं कम की बात ही नहीं करूंगा, सेविंग. ठीक है, कम करना का मतलब कैसे हुआ, देखिए जैसे कि भाई 40 रुपीज का एक्सपेंस आता है, तो इसको मैं 39 कैसे करूं या 38 कैसे करूं, ये सोचना. यह नहीं, 40 ही रहने दो, एक्सपेंस आता है. ठीक है, उस एक्सपेंस का यूटिलाइजेशन बढ़ाओ. आई क्या बात समझे, उस एक्सपेंस का क्या करो आप, यूटिलाइजेशन बढ़ाओ. मतलब ऐसा हुआ कि जैसे सिंपल सी बात नहीं है, इतना आसान. कैसा कि जैसे फैन चालू है, ठीक है, अब फैन जब आप प्रेजेंट हो तो फैन तो शुरू रहेगा. तो समझो एक शिफ्ट है, समझो 2 घंटे की, 4 घंटे की. 4 घंटे में पहले समझो अपन 200 किलोग्राम का प्रोडक्शन ले सकते थे, यानी लेते हैं. तो मैं ये समझूंगा फर्स्ट टाइम 201 क्यों नहीं. Is it possible to take 201 kilogram production within that available span? Automatically what happened here, कॉस्ट आपका सेव हो गया, क्योंकि 40 रुपीज के इंकरेशन में जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, आपने 200 kg का प्रोडक्शन लिया था, उसी में आपने अभी 201 का लिया. आई बात समझिए, मतलब 40 रुपीज डिवाइड हो गए थे पहले 200 kg में, अभी वो 201 में हो गए. आई बात समझिए, ऐसा सेविंग अगर किया ना तो फिर प्रॉफिट जो
बढ़ेगा आपका, वह प्रॉफिट रहेगा हेल्दी। और दूसरा ऐसा है, हेल्दी रहने से आपका ट्रू फाइनेंशियल पिक्चर जो बैलेंस शीट शो कर रहा है वह और हेल्दी बनेगा। ठीक है, अब दूसरे लेक्चर में इसके आगे के मैं रेशियोज यानी एक्सप्लेन कर दूंगा। Subscribe my channel to learn financial accounting, cost accounting, management accounting, financial management, financial derivatives, economics, and for other commerce subject at your home. For that, press a bell icon for notification. Post your doubts and queries in comment box. Thank you.